नमस्कार आज फोकस पॉइंट को आपण स्वागत। दिल्ली रे आप एवं बीजेपी मध्य जारी रही आरोप प्रत्यारोप पर्व। बीजेपी दुर्नीति को अस्त्र करी आप को टार्गेट करी चली। अबकारी पर एबे शिक्षा नीति को नहीं प्रश्न उठाई बीजेपी। एपटे आप विधानसभा सड़क जाए बीजेपी एवं सीबीआई विरोध में जारी रखी संग्राम। पाकिस्तान को अस्तव्यस्त करी पकाई बन्या। सप्ताहे हेलानी पानी घेर में अधारू अधिक पाकिस्तान। रिलीफ एवं उद्धार कार्य नियोजित होईछि सेना। जातिसंघ चिंता व्यक्त करने सहित सहायता पाई अपील करिछि। आज फोकस पॉइंट देखा विश्व हराइला जड़े चर्चित नेता 91 वर्ष बयस मिखाइल गोर्बाचेव को देहांत। सोवियत संघर शेष नेता मृत्यु विश्व नेता व्यथित करिछि। काहींकि चर्चारे थिले एही नेता। भूताणु भय नथिबारु एथर धूमधाम रे पालन हेउछि गणेश पूजा। किभली रहिछि मुंबई रे माहौल, किभली गणेश पूजा कले नेता एवं सेलिब्रिटी। ए तमाम खबर को नहीं चलतु देखा आज फोकस पॉइंट। थमुनी आप बीजेपी मध्य आरोप प्रत्यारोप। अबकारी दुर्नीति स्कूल श्रेणीगृह निर्माण रे दुर्नीति आउ एबे उपराज्यपाल विनय सक्सेना विरोध में मनी लॉन्ड्रिंग अभियोग। ग्राउंड जीरो रे स्थिति अनुध्यान बेले स्कूल सामना रे मुहामुही होइछंती आप नेता सौरभ भरद्वाज एवं बीजेपी गौरव भाटिया। उपराज्यपाल पदरु विनय सक्सेना बहिष्कार एवं गिरफ्तारी दाबी रे सीबीआई ऑफिस आगे विक्षोभ करिछि आम आदमी पार्टी। सेपटे अभियोगर 3 ରୁ 4 दिन पर सामना को आसीछि उपराज्यपाल ऑफिस। आप नेता मानहानि मोकद्दमार धमक देइछंती उपराज्यपाल। अबकारी दुर्नीति जाई कथा जाई केउठी पहुंचिलानी। नुआ अबकारी नीति को नहीं दिल्ली उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अड़ुआरे छंदी होइतिबा बेले आप और बीजेपी मध्य आरोप प्रत्यारोप चरम सीमा टपिलानी। दिल्ली केजरीवाल सरकार विरोध में बीजेपी स्कूल श्रेणीगृह निर्माणर सारी दुर्नीति अभियोग आनिथिबा बेले स्कूल आगरे मुहामुही होइछंती दुई दलर नेता। बीजेपी नेता गौरव भाटिया एवं आप नेता सौरभ भरद्वाज स्कूल आगरे होइछंती मुहामुही। देखंतु कौन चली। 8.5 साल में बन रहा है और 15 लाख रुपए में 8.5 साल में ये सच्चाई है। 15 लाख रुपए में अभी बना नहीं है और बन रहा है। बात है मैं इतना ही कहूँगा। दिखाओ बिल्डिंग, दिखाओ बिल्डिंग भी दिखा दो, बिल्डिंग भी दिखा दो की सूची अगर मिल जाती नहीं आपको लेकर चलेंगे ना। अच्छा सूची नहीं, डर लग रहा है। ठीक है, डर लग रहा है। धन्यवाद, सच्चाई सामने आ गई है। यही दिखाने आए थे, यही भ्रष्टाचारी सरकार है। कट्टर बेईमान सामने है। देखा आपने, मुझे पता है डर लगेगा। अभी तो चलेंगे। स्कूल भीतर को जाई प्रकृत स्थिति स्वचक्षुरे देखा बीजेपी नेता गौरव भाटिया को कहउछंती आप नेता सौरभ भरद्वाज। किंतु भीतर को जीवाकू सत्साहस जुटाई पारि नाहंती गौरव भाटिया। देखंतु केमिति कार रे बसी पळाउछंती आउ गला बेले केमिति चलीछि नाराबाजी ताहा मध्य सुनंतु। अबकारी सह स्कूल श्रेणीगृह निर्माण दुर्नीति नहीं बीजेपी आम आदमी पार्टी को टार्गेट करुथिबा बेले सीधा उपराज्यपाल को निशाना करुछंती आप नेता। वर्तमान उपराज्यपाल थिबा विनय सक्सेना 2016 विमुद्रीकरण बेले मनी लॉन्ड्रिंग करुथिबा अभियोग करि चलिछंती आप नेताए। विनय सक्सेना केंद्रीय खदी बोर्ड अध्यक्ष थिबा बेले 14,000 कोटी टंकार मनी लॉन्ड्रिंग करिथिबा आप अभियोग करिछि। एही दाबी रे दलर नेता माने सीबीआई ऑफिस आगरे विक्षोभ करिछंती। तुरंत विनय सक्सेना को उपराज्यपाल पदरु बहिष्कार करी गिरफ करने से माने दाबी करिछंती। भाजपा का कोई भी छोटा मोटा नेता आता है उसको सीबीआई के लोग अंदर बैठाते हैं, उसको पूरा सत्कार देते हैं, उसकी शिकायत देते हैं, मोहर लगाते हैं, वापस भेजते हैं। हमारे विधायक, चुने हुए विधायक यहाँ पे आए, उनसे मिलने के लिए तैयार नहीं। इसका मतलब साबित होता है कि सीबीआई भारतीय जनता पार्टी के कहने पे काम करती है। भारतीय जनता पार्टी के 6300 करोड़ रुपए अब तक जो विधायकों की खरीद में लगे वो पैसा डीजल और पेट्रोल के ऊपर टैक्स बढ़ा के जनता के ऊपर जो बोझ डाला गया उससे कमाया गया पैसा है। जो दूध और दही और छाछ और आटा और दाल चावल पर टैक्स बढ़ा के जीएसटी बढ़ा के पैसा वसूला गया वो उसका पैसा है।
कि किस तरह से ये 6,300 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में अलग अलग राज्य की सरकारों को गिराने में खर्च किया है, कि जो दिल्ली के विधायकों को खरीदने के लिए 800 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी ने तैयार रखा है, ये 800 करोड़ रुपया कहां से आया? 3-4 दिन हेब उपराज्यपाल विरोध में मनी लॉन्ड्रिंग अभियोग आनी आप एवं सेमाने सीबीआई ऑफिस आगे विक्षोभ करी तांको बहिष्कार और गिरफदारी दाबी करिथिबा बेले पूरा घटना उपरे सफेई देछि एलजी को ऑफिस। मिछ अभियोग आनी आम आदमी पार्टी नेता माने तांको सम्मानहानि करुछंती, जहा विरोध में से मानहानि मकदमा दायर करिवे बोली धमक दैछंती उपराज्यपाल विनय सक्सेना। उपराज्यपाल कहवा कथा 2016 रे एही अभियोग आसिथिबा बेले सीबीआई तदंत करिथिला 17,07,000 टंका पुराना नोट मिलिथिला, जेउथिरे 2 जण कर्मचारी संपृक्त रहिथिबा अभियोग अछि। मामला एबे कोर्टर विचाराधीन थिबा बेले तांकर कौनसी प्रकार संपृक्ति नथिबा सफेई दैछंती विनय सक्सेना। गत वर्ष दिल्ली रे नुआ अबकारी नीति लागू करिथिले केजरीवाल सरकार, सेतेबेले विशेषज्ञ कमिटी करिथिबा अनुमोदन को दिल्ली सरकार लागू करिनथिबा अभियोग रहिथिला, जेउथिरे हजार हजार कोटी टंकार दुर्नीति होइतिबा कही गत मासरे सीबीआई तदंत पई अनुमोदन करिथिले उपराज्यपाल विनय सक्सेना। किछि दिन तळे सीबीआई मनीष सिसोदिया बासभवन और ऑफिस रे रेड करिथिबा बेले प्रवर्तन निर्देशालय केस रुजु करिछि। हमें इस बात का बहुत दुख होता है कि जहां दिल्ली में एक पर एक घोटाले होते जा रहे हैं, वहीं दिल्ली में जिनका नाम कहीं महाठग है, महाझूठे हैं, अपनी बातों से लगातार पलटने वाले लोग, ऐसे अरविंद केजरीवाल गैंग कभी भी दिल्ली की जनता के प्रश्न पे जवाब देने को तैयार नहीं है। जरूरत है आज कि दिल्ली की जनता को ये गारंटी मिले कि जो घोटाले हुए हैं वो वापस कैसे दिल्ली के खजाने में पैसे आएंगे। देश का नहीं, दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा मॉडल भी इन्हीं के पास है, मगर इनके खुद के बच्चे उस शिक्षा मॉडल का लाभ नहीं उठा रहे हैं। देश ही नहीं, दुनिया का सबसे अच्छा स्वास्थ्य मॉडल भी इनके पास है, मगर इनके मंत्री, इनकी धर्मपत्नी, इनके विधायक, सांसद वो उसका लाभ नहीं उठाते। तो केवल अंतर 19-20 का नहीं है, 0,000 का है। पुणी मंगलवार पीएनबी बैंक रे मनीष सिसोदिया लकर खानतलासी करिथिला केंद्रीय एजेंसी, जेउथिरु पाखापाखी 70,000 टंकार अलंकार मिलिथिबा कुहा जाउछि। एही घटना परे मनीष सिसोदिया निजकु निजे क्लीन चिट देउथिबा बेले आप बीजेपी मध्यरे टणा ओटरा जोर धरिछि। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। मेक इन ओडिशा पई क्षेत्र प्रस्तुति। डिसेम्बर मासरे मेक इन ओडिशार तृतीय संस्करण हेबाकु थिबा बेले राज्य को अधिक पुंजीनिवेश आनिबा पई बड़ योजना करिसेंती राज्य सरकार एवं वर्तमान मुख्य शासन सचिव सुरेश चंद्र महापात्र एक सांबादिक सम्मेलन आयोजन करिसेंती। आसंतु देखिबा यार सीधा प्रसारण। And now, once again, MIO 2022 is all set to enthrall and inspire. Eminent business thought leaders share their perspectives and expectations from the future. A special session on technology transfer seeks to enhance industry-institution linkages, a vast number of B2B and G2B meetings, a multi-pronged editors' roundtable to discuss the developmental way forward of various key sectors. The conclave will also underline Odisha's core strengths to the world, highlighting exquisite skills, building from the cradle of a new age workforce, and innovative startups that are high on ideas, promoting entrepreneurship for women, building an inclusive, resilient Odisha,
highlighting the cause of ecotourism to give the planet its due respect. The conclave also celebrates Odisha's colossal culture by blending together heritage and modernity. Last but not the least, a comprehensive Make in Odisha Expo on the state's industrial acumen and investment opportunities. At MIO 2022, Odisha seeks partners in progress from all across the world. Let's grow united. We are ready to redefine your expectations. I invite you all to the Make in Odisha conclave. Come join the juggernaut. Odisha, a unique state with an incredible journey. May I now request Shri Hemant Sharma, Principal Secretary, Industries Department, Skill Development and Technical Education, and Chairman IPICOL and IDCO to kindly enlighten us with a presentation on the business ecosystem in Odisha. Ladies and gentlemen, did you like this video? So can we have a round of applause, please? I think on the far side of the hall, I can't hear any applause from the far side. Can we have another round of applause from the far side, please? Honorable Chief Minister, sir, Honorable Minister Industries, Senior Vice President from FICCI, Chief Secretary Odisha, senior officers from Government of India, very senior representatives from FICCI and Indian industry, representatives from industry associations, honorable MPs. It's a great honor for me to be giving this brief but detailed presentation on some of the aspects of Odisha which you know, some which you might discover today. The short video which you just saw gave you a glimpse of what Odisha has to offer and also what Make in Odisha Conclave 2022 would look like. Odisha has been a story of transformation. The unique factor, the parameter, single biggest factor which defines Odisha and keeps it in contrast with most other states of the Indian Union today is our political stability. We have been led by the Honorable Chief Minister Shri Naveen Patnaik for more than 22 years. He must have done something for the people of Odisha. There must be something good which is happening in Odisha under his leadership, that he has been elected again and again and again and is now serving his 5th term in a keenly contested democratic framework. There is something unique about him. There is something unique about Odisha and the political stability which is important. This political stability gives us what investors community calls policy certainty. Our policies are not cast in stone, they are responsive, but we have no policy flip-flops. And unfortunately for many others, but fortunately for us, we are surrounded by a group of states where you see very quick turnarounds, very quick flip-flops, but we are a state who take pride. This political stability gives us policy certainty. It has given us pro-people governance, and it has given us a financial strength, financial muscle, which no state in the country can equal today. We have grown at more than 10.1% over the last few years. We are one of the fastest growing economies in India. We have seen not only good progress over the last 20 years, but we have also seen rapid progress, rapid recovery post-pandemic. While the whole country grappled with the COVID-induced drop-downs, we were one of the economies which could see a very quick recovery. Just before this meeting, Shri Deepak Bagla, Managing Director of Invest India, he just gave a statistic that in between 2020 and 2022, our economy has grown by 14.6 times. That is the kind of growth which we have seen
in the state. In the last 2 years, we have received more than 4 lakh crores of investment intents despite a global pandemic. And why is that so? We would see shortly. What defines us today again is our mineral advantage, the geographical advantage which the state has been bestowed with. We are the largest source of iron ore, bauxite, manganese, chromite, nickel for the Indian industry today. We have the good presence and a good spread of all the mineral resources in the state, as you can see on your maps. North and West Odisha is rich in iron ore, Central Odisha is also rich in iron ore and coal, and South Odisha is where bauxite and other resources lie. So we are today the largest producer of iron ore, largest producer of bauxite, second largest producer of coal, largest producer of chromite, and this gives us not only an advantage on the mineral front, but also a tremendous advantage on the economic and industrial front. And we are not only the largest producer of iron ore, we were the largest producer of iron ore, today we are the largest producer of steel. We are also the largest producer of stainless steel. We are the largest producer of alumina, the largest producer of aluminium. The tremendous growth which this industry, mining and metallurgy, which we would witness in the coming few years, gives us immense set of new opportunities. Mechanization of the existing mines, operation of new mines, utilization of lower grade of ores, use of advanced technology solutions, and a policy where we provide long-term linkage, assurance of long-term raw material stability to the industries who come and set up their shop on Odisha. What you have seen in mineral resources is our continued progress, but this gives us a tremendous set of new opportunities in logistics, in mining support services, in circular economy, in iron ore beneficiation, in logistics and manufacturing and servicing of mining equipment. Today, ladies and gentlemen, the largest demand center of mining equipment, mining machinery, mining services is in Odisha. World's largest iron ore slurry pipeline is being set up in Odisha as we speak. The second largest is also being set up in Odisha. The third largest is also being set up in Odisha, and the fourth largest is already in Odisha. That is the kind of opportunities this will create in the years to come. Because of the value addition policy which we promoted under the leadership of our Honorable Chief Minister, as I mentioned, we are a very large producer of metals. And this value addition policy makes us the single largest producer of steel, stainless steel, alumina and aluminium, and a very large producer of cement and coal-based thermal power. We have set up this infrastructure in a planned manner. Our mineral belt and our industrial belt are integrated with the logistics. It is seamless connectivity from the mineral zone in Keonjhar and Sundargarh to the manufacturing zone in Kalinganagar, Angul, Dhenkanal, and up to the ports at Dhamra, Paradip, and Gopalpur. The intense road and rail network and the ports which we have set up brings a seamless connectivity to the mineral zone and the industrial zone. There are dedicated industrial parks for steel, for aluminium, for cement, for food processing, and for all the major segments of industry which we are now promoting in this state. Incidentally, the world's largest steel plant is being set up in Odisha right now. The second largest steel plant is also being set up in Odisha, and the third largest steel plant also is being set up in Odisha. India's largest stainless steel plant is already in Odisha, and Abhyuday Jindal from JSL, he represents that company here for you today. But that's not all. Our mineral, metallurgy and metal story is known. What I presented to you is the future for the next 10, 20, 30 years. What would change in this sector and what new opportunities would come. But we already have a massive presence in chemicals and petrochemicals owing to the presence of Indian Oil Corporation. Mr. Vaidya, chairperson of Indian Oil Corporation, is here today. He just met the Honorable Chief Minister and we are discussing a very large investment on the east coast of India, probably the largest investment on the east coast of India in a polymer complex. They are already running a large refinery
At Paradeep, we are one of the 3 states in the country to have the PCPIR, but we are the only state in the country in PCPIR with land further available for allocation. Close to Paradeep port, ready to walk in, 5,000 acres of land, factory gate availability of water, factory gate availability of power, not more than 10 kilometers from a major port. We have good presence of chemical and fertilizer industry there. IFCO, Paradeep, phosphates and others have big presence. A very large PTA and MEG complex is coming up, again courtesy IOCL, and a technical textiles park is being set up nearby. In textiles and technical textiles also, we are the next leaders on the east coast of India. All that we have seen in technical textiles till now in India has been on the west coast, but now the emerging opportunity is actually on the east coast, and we are ready for it. The Bhadrak Technical Textiles Park, the Paradeep Textiles Region, and the other textiles park which we have set up today are good opportunities for all of you. IT and ITS, amongst the tier 2 cities and states, we have a big presence. All the known industries in this segment have a presence in Bhubaneswar, and the speed with which we operate. Very recently, our Honorable Chief Minister, under his guidance, we could get 2 of the most coveted investments in this region for reasons of non-disclosure. I am not able to take their names from stage, but I can share with you privately, and very soon you would hear about them. We also have a dedicated focus on some of these sectors which you see. We know that this advantage in metals and advantage of infrastructure being on the east coast gives us good opportunities in the new and emerging sectors, whether it is apparel or in metal downstream, agri and seafood processing, handloom, handicrafts and textiles, tourism, chemicals and plastics. And we are one of the states in the country where we not only have sectoral policies to support these, but we also have sectoral industrial parks for each one of these sectors in Odisha. This is some of the industrial infrastructure which we have set up. PCPR I already mentioned, the National Investment Manufacturing Zone at Kalingnagar. Today you would be surprised, Honorable Chief Minister had advised us to do a similar road show, a smaller one at Jamshedpur with Tata Steel. 35 companies attended and 22 of them have come in the last 2 months to plan their investments in Kalingnagar. Why? Because with the acquisition of NINL by Tata Steel under Deepam, Ministry of Finance, Government of India, the entire steel industry in East India, whether it is Jharkhand, Bihar, Chhattisgarh and parts of West Bengal, is now migrating towards Odisha, and tremendous opportunities there, and we have the right infrastructure. Dhamra investment region close to the Dhamra port, which is a government port run by Adani's, more than 1100 acres of land with factory gate availability of water and power. Gopalpur Industrial Park, SEZ 3,500 acres, DTA 1,500 acres. Aluminium Park at Angul is a unique proposition where close to the Nalco smelter you get molten metal. Imagine all the auto component manufacturers or extrusion manufacturers in the national capital region, they buy aluminium or haul it all the way from Angul or from other places in Odisha, because aluminium is there only in Odisha, to this place, pay 10,000 rupees per. ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କଟନ ରେଜର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ସିଧା ସଳଖ ଚିତ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ସବୁଠି ଭକ୍ତିର ପରିବେଶ, ସବୁଠି ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ। 2 ବର୍ଷ ପରେ ବେଶ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ ହେଉଛି ଗଣେଶ ପୂଜା। ମୁମ୍ବାଇରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ସଭିଏଁ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ଗଜାନନଙ୍କ ପୂଜା। ବିଶେଷ କରି ନେତା ଏବଂ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ଘରେ ଘରେ ଏଥର ବେଶ ଜାକଜମକରେ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ଧରାବତରଣ କରିଛନ୍ତି ବିଘ୍ନେଶ୍ୱର। ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଗଣାଧିପତିଙ୍କ ଆବାହନ। 2 ବର୍ଷ ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ। ଘରଠୁ ଘର, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ମଣ୍ଡପ ସବୁଠି ବେଶ ଜାକଜମକରେ ଚାଲିଛି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା। ଗଣେଶ ପୂଜାକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶ ଏବେ ଉତ୍ସବମୁଖର। ବିଶେଷ କରି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛି ମୁମ୍ବାଇ ସହର। ପୂର୍ବପରି କରୋନା ଭୟ ନଥିବାରୁ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଧୁମଧାମରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଗଣେଶ ପୂଜା। ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆୟୋଜନ। ଫୁଲ, ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର, ପୁଷ୍ପ, ଅକ୍ଷତ, ଫଳ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲଡୁ ରହିଛି ପୂଜା ଥାଳିରେ। ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ବୁଦ୍ଧିଦାତା ଗଣେଶଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଉଛି। ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ ଆସି ଗଜାନନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ।
समस्त मनरे भक्तिर भावावेग। मुंबई रे नेतांक घरे देखा मिलता गणेश पूजा। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे निज घरे करिसेंती पूजा अर्चना। परिवार लोकों सह पूजा करिसेंती सीएम। प्रभु गजानन समस्त को भलरे रखंतु, सब वर्ष भली एभली पूजा पांतु गणेश। सेभली कांग्रेस नेता अशोक चौहान निज बासभवन में पूजा अर्चना करिसेंती। राज्यवासी मंगल कामना करिसेंती अशोक चौहान। बीजेपी नेता प्रहलाद जोशी कर्नाटक स्थित बासभवन में परिवार लोकों सह करिसेंती पूजा अर्चना। राज्य के सभी गणेश भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और ये इस साल का जो गणेशोत्सव है बड़े धूमधाम से निर्बंध मुक्त तरीके से लोग मना रहे। पिछले 2 साल में कोविड की वजह से कई निर्बंध थे, लेकिन इस साल बड़े जोर शोर से भक्ति भाव से लाखों करोड़ों गणेश भक्त इस गणेशोत्सव को आनंदपूर्वक श्रद्धापूर्वक इसका आयोजन कर रहे हैं। मैं सभी गणेश भक्तों को फिर एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। सुख शांति और विघ्न जो हो, विघ्न दूर हो जाए, सुख शांति हर आदमी के, हर व्यक्ति के, हर परिवार के घर में आ जाए, समृद्धि उसको प्राप्त हो। और वैसे ही जागतिक तौर पे हो, देश में हो, महाराष्ट्र में हर व्यक्ति के घर में गणपति बाप्पा उसके विघ्न दूर करे, हमारे भी सबके विघ्न दूर करे और बड़ी खुशियों के साथ में आने वाला समय हम सब मिलकर बिताए। पारिवारिक सुख हो, आनंद हो, ऐसे वातावरण में हम सब के आने वाला भविष्य काल भगवान हमें आशीर्वाद दे, ये हमारी ऐसे गणपति बाप्पा से प्रार्थना है। गणेश पूजा पाई चर्चंच होई उठिछि मायनगरी मुंबई। नेतांक परि सेलिब्रिटी माने बेस धूमधाम रे निज घरे करिसेंती गणेश पूजा। 2 वर्ष परे गणेश पूजा धूमधाम रे होथिबारु केही भी याको हाथ छड़ा करबा मूड रे नहांती। केही निज घरे पूजा करिथुआ बेले अनेक मंदिर रे करिसेंती गजाननक दर्शन। पूजा कमिटी रे भक्तंक सह अनेक शामिल होई पूजा करिसेंती। रील परी रियल लाइफ रे आम बॉलीवुड सेलिब्रिटी माने एथर केमिति पाइछंती गणेश पूजा नजर पकांतु। खान परिवार हुंतु किंबा बच्चन परिवार अबा कपूर फैमिली, गणेश चतुर्थी सेलिब्रेशन आम स्टार मानक पाई थाए किछि खास। घरे घरे भगवान गणेश मूर्ति आनी पूजा करने सह बंधु परिजन को डाकी खूब उत्साह पालन करिसेंती गणेश आवाहन। बहुत 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 ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। इनफैक्ट कल रात से ही जब से पापा आए हैं बहुत पूरा घर का माहौल ही बदल जाता है। एंड जैसे कि आपने कहा पिछले 2 साल से हम उस धूमधाम से नहीं मना पाए थे इस पर्व को। हालांकि गणपति जी आ रहे थे लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि वही उमंग, वही उत्साह, वही धूमधाम वापस से आ गई है। और इन 5 दिनों का पूरे साल इंतज़ार रहता है। और 5वें दिन जब पापा जाते हैं तो बहुत दुख भी होता है। जो मैंने पिछले साल आपने देखा होगा उनके कान में बोला था, तो इस साल वो पूरा हो गया है, तो उन्हीं का आशीर्वाद है। हालांकि घर अभी कम्प्लीटली रेडी नहीं है, लेकिन जो भी है उनको लेकर जा रहे हैं और उनका खूब ध्यान रखेंगे। मैं भी इक्वली एक्साइटेड हूँ, मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है। तैयारियां इस बार थोड़ी ज़्यादा मतलब अच्छे से कर रहे हैं बिकॉज मतलब अब हम अपने नए घर में जा रहे हैं और पापा हमारे साथ में जा रहे हैं। कश्मीरा के घर पे आई थिंक 100 साल हो गए, 100 ईयर से गणपति जी आते हैं। तो आई थिंक ये एक फेस्टिवल है जो हम लोग पूरी फैमिली जो है सबसे ज़्यादा यही एक फेस्टिवल है जो सेलिब्रेट करते हैं। कश्मीरा जी कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो? इस बार मुंबई का एनर्जी काफ़ी हाई है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लग रहा है 2 साल के बाद। क्या कहना चाहोगे? मुंबई और पूरी दुनिया से कोई बीमारी ना आए, कोई किसी को तकलीफ ना आए, पापा सबका ख्याल रखें।